बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम स्टार्ट करते हैं जब, तो हम इस तरह से लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉमा वाई। ठीक, और ये इसका जो आयोटा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस जो विदाउट आयोटा पार्ट है दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट। या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं रियल प्लस आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट। और हम इस केस में हम ये कहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो है हमारा वो x के बराबर है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है हमारा वो y के बराबर है। ठीक, दैट्स अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट। So we can write it in this form as well. और तीसरी एक और फॉर्म हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और हो सकती है वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें हम इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू आर ई टू द आयोटा थीटा। याद रखें ये जो दूसरी फॉर्म है यहाँ पर r जो है ये आपका बराबर होता है z का जो मॉड्यूलस होता है या मैग्नीट्यूड जिसको आप कहते हैं। ठीक, और थीटा उसका जो आर्गुमेंट होता है। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पर भी r की वही इंटरप्रिटेशन है और थीटा ये इसका आर्गुमेंट है। ठीक, एक एग्जांपल करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डी मोइवर्स थ्योरम। एग्जांपल, इफ वी कंसीडर z इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नाउ वी वांट टू सी दिस complex number into polar form as well as exponential form, क्योंकि ये ऑलरेडी रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो है ही, क्योंकि इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, राइट। विल स्लाइडली चेंज दिस क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, राइट। सो लाइक ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो है ही, माइनस स्क्वायर रूट 3 -1। अब इसको हम लेकर जाएंगे एक पोलर फॉर्म में और दूसरा हम इसको लेकर जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में लाने के लिए हमें इसकी एक तो इसका r चाहिए जो कि बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z या मॉड्यूलस ऑफ z। ये तो बराबर होता है, आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं हम लोग और प्लस करते हैं इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड वी टेक सम एंड देन वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा 3 + 1 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा विच इज बेसिकली 2। तो r तो हमारा 2 आ जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसमें एंगल क्या आएगी, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो आर्गुमेंट है ना उसको फाइंड करते हुए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो जो हमारा थीटा है उसका फार्मूला होता है arc tan y अपॉन x। अब y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है arc 10 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 डिवाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये अंदर जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना तो ये बेसिकली प्लस में आ जाएगा arc 10 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब जब आप ये कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करवाएंगे तो मोस्टली ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल बता देगा। मिसाल के तौर पर इफ यू टेक दिस एंगल तो ये आपको देगा π/6 यानी 30 डिग्री जिसको आप कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका x भी नेगेटिव है y भी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, लेकिन जो हमें एंगल मिली है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मिल रही है, तो वी नीड टू चेंज दिस। ओके, हम इस एंगल को स्केच करें तो ये यहाँ पर कहीं पे आ जाएगी। ओके, सो इट्स 30, सो यहाँ पर कहीं पे ये एंगल आ जाएगी π/6।
ठीक। अब उसूली तौर पे ये जो एंगल है या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको होना चाहिए कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहीं से अगर आप यहाँ डॉटेड लाइन लगाएं तो बेसिकली यहीं कहीं पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को होना चाहिए, इसकी एंगल ये होनी चाहिए। तो ये एंगल ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है ना इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके आना चाहिए, आना पड़ेगा आपको। तो ये बेसिकली आप पाई जो है ना 180 डिग्री इसमें ऐड करेंगे π/6 में। तो जब आप π/6 में ऐड कर देंगे पाई, सो यू विल इंटरेस्टिंगली गेट 7π/6। तो अब आपकी जो थीटा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7π/6। तो अब आपके पास r भी आ चुका है, अब आपके पास थीटा भी आ चुकी है। तो अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यू कैन पुट इट इनटू द पोलर फॉर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, right? So my complex number was minus square root 3 minus iota, and my r was 2, and my theta turned out to be 7π/6. Now what I can do, I can use this formula, z is equal to r cos theta plus iota times sin theta. Now when I put the values, my r is 2, so cos of theta 7π/6 and plus iota times sine 7π/6. So that is how I can write my complex number into a polar form. And interestingly, there I can also write my complex number into the exponential form, and you know that exponential form is given by z r e to the iota theta. So my r is 2, my theta is 7π/6, so e to the 7π/6 times iota. So that's how you can convert any complex number into polar form as well as exponential form. Now the thing that we are going to turn and to talk about is the de Moivre's formula. It's the Moivre's formula. So it says that if you are taking the nth power, so n is of course the natural number, if you are taking nth power of this sum, यानी कि cos theta plus iota sin theta के ऊपर पावर n अगर आप लेते हैं, so you will obtain cos n theta plus iota sin n theta. Now you can prove this by anyway, but I will apply the method of principle of mathematical induction, so we will use that. So मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, बेसिक स्टेप जो होता है हमारा बेसिस स्टेप, उसको हम लेंगे। बेसिस स्टेप हमारा ये होता है जो कि स्टेप 1 भी आप कह दें या बेसिस स्टेप है, जिसमें हम n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को चेक करते हैं। n इज इक्वल टू 1 अगर इस पूरे में पुट करें, तो अगर आप लेफ्ट साइड को आप कैलकुलेट करें n इक्वल टू 1 पर, तो मेरी जो लेफ्ट साइड है n इक्वल टू 1 पर वो आएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। और इसी तरीके से अगर आप क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है तो ये वही बन जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पर जाएं, सो राइट साइड which is basically this side and left side is this, like I am considering this as left side and this as right side, okay? So my right side will be cos n will be 1 theta plus iota sine 1 theta, right? So it is going to be cos theta plus iota sine theta. Now you can see that left side and right side are equal because they have the same results. So हम कह सकते हैं कि हमारा जो basis step है that is true. So now we will assume for n equal to k, like assume for n equal to k our result is 2. For n is equal to k our proposition or our result is true. Result is true. In other words, cos theta plus iota sine theta whole power k is equal to cos k theta plus iota sine k theta. That is it. But now final step that we will be going to prove is we will prove it for k plus 1. So like if k is
taking on, so like if this result is true for k, we will prove now from this assumption that this is also true for k plus 1, and if we are done with that, फिर हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अगर कोई प्रोपोजिशन नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, n इक्वल टू 1 पर ट्रू वो है, और आप अज्यूम करते हैं k पर ट्रू है, और वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, so then your result is true for all n. So now we will use this result. This is, so I can call this as equation 1, right? So now let's talk about for n equal to k plus 1. So I will consider this cos theta plus iota sine theta raised power k plus 1, and then I can write this cos theta plus iota sine theta whole power k multiply by cos theta plus iota sine theta whole power 1. But now we have already assumed an equation 1 that this can be written as cos k theta plus iota sine k theta, right? So if this is the case, then I can multiply this with cos theta plus iota sine theta, and then we can multiply this term by term. So cos k theta is multiplied with cos theta plus iota times cos k theta times sine theta plus, and then now multiply this term with both of the other terms. So iota sine theta, sine k theta, sorry, times cos theta, and finally this iota will get multiplied with this iota, so it will be minus 1 times sine k theta and sine theta. So now I will rearrange all of these. So like I will be keeping the imaginary part, the numbers with imaginary iota together, and the number with which are the real part together. So cos k theta n times cos theta minus sine k theta times sine theta. These are real parts basically, and iota times these are two imaginary parts. So cos k theta times sine theta and plus sine k theta times cos theta, right? So this is how I can write. So now you apply your trigonometric identity. This is cos alpha plus beta, so this is going to be cos k theta plus theta. Like this is alpha and this is beta, this is alpha and this is beta, and this plus iota times this is going to be sine alpha plus beta, because sine alpha plus beta is nothing but sine alpha cos beta cos alpha sine beta with this alpha and beta. So like you just rearrange them, so it is going to be sine alpha plus beta, another word k theta plus theta, and then I can write all of this as k plus 1 theta cos of k plus 1 theta plus iota times sine of k plus 1 theta. So this ends the proof for the de Moivre's theorem. Using this de Moivre's theorem, we can compute the powers of complex numbers. For example, we have recently seen a complex number minus square root 3 minus iota, and now I'm interested in finding out the eighth power of this complex number. So one way could be you can expand this formula. The other way is going to be to take the help of polar form and then the so-called de Moivre's theorem. So let's take this z to be equal to minus square root 3 minus iota, but I have already seen that this can be written as 2 times cos 7 pi by 6 plus iota times 7 pi by 6, right? And this is the polar form of this complex number. So now if we take eighth power of this, so this will be 2 times cos 7 pi by 6 plus iota times 7 pi by sine 7 pi by 6, and all of this raised power 8. So now this power will be on 2 as well as on this part, cos 7 pi by 6 plus iota sine
7 pi by 6 whole power 8. So now I will use the Moivre's theorem on this part, right? So 2 raised power 8 times cos of, so like 7 8, so like you will multiply this like cos n